A very good morning to all of you. I welcome all of you to this interactive session brought to you by Upstox Securities. My name is Amit Goyal, and I shall be, leading this session for all of you. The session is going to be on divergence and convergence, trading with RSI, stochastics, Bollinger Bands, and volume patterns. This is going to be an interactive session, so keep as many questions as possible coming up, so that we can have a nice interactive session about these important topics. Before we start the session, let me start the presentation so that you are able to see the screen. Just give me a second. All right, friends. So, yeah, good morning, everybody. So I see a lot of participants today. It's nice to see all of you here. And before we start the topic, there are certain SEBI disclaimers and disclosures which needs to be shown to you. So let me just do that. I'm just setting up the screen properly so that we will have a good interactive session. All right. So, Rajesh ji, first and foremost, since you have asked this question, Nifty का target क्या है आज? Let me give you this disclaimer कि यहाँ पे कोई भी stocks का या index का trading tips नहीं दिया जाएगा. ये मोर एजुकेटिव सेमिनार या वेबिनार है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है. तो यहाँ पर कोई भी आपको स्टॉक टिप नहीं मिलेगा. अगर आप उस उम्मीद से आए हैं तो आई एम सॉरी, बट यहाँ पर आप बने रहिए, क्योंकि काफी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. राइट. तो बिफोर वी स्टार्ट, ये सेशन जो है हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, एंड कुछ डिस्क्लेमर्स वगैरह दे देते हैं ताकि वी कैन स्टार्ट. नाउ हाउ टू एंटिसिपेट मार्केट रिवर्सल्स बिफोर दे हैपन, दिस इज द टैगलाइन. मतलब ये हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट रिवर्सल्स को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करें और उनको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए. सो ये अपना आज का मूल मंत्र होगा. दिस इज गोइंग टू बी द की टेक अवे फॉर अस. Who am I? My name is Amit Goyal. I'm a CMT, Chartered Market Technician, जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिग्री सर्टिफिकेशन मानी जाती है वर्ल्ड ओवर. ये यूएस में दिया जाता है. इसके अलावा आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट. मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर यहाँ पर है, एंड ये मेरा सेबी मैंडेटेड और वेबसाइट भी है, जिसमें मेरी डिटेल्स और सारे डिस्क्लोजर्स आपके लिए हाजिर है. Standard investment warnings, investment in securities, investment securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantees performance of the analyst or provide any assurance of returns to investors. और भी कई सारे डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स हैं जो मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी मैंने उनके की स्निपेट्स आपको दिखा रखे हैं. So I just wait for a 10 सेकेंड ताकि आप इसको देख लें, एंड फिर इसको हम लोग आगे लेके चलते.
जी प्रकाश जी, thank you for being a regular participant in these sessions, and I will try and clarify this doubt of yours कि RSI should be traded only on divergence or not. So it's a very interesting question. So what we will do is we will start this session and then we will take up that question. शादिल भाई, हम लोग कोशिश करेंगे. प्रकाश जी, मेरे पास I do not sell any services, so there are no offers on the website. It is basically a mandated website जिसमें मैं अपने disclosures और अपने details बताता हूँ as per SEBI mandate. So I'm not selling any services as of now. If at all I do start selling services of research, I will most definitely come to all the public and then advertise that as well. For the time being, I'm only here partnering with Upstox to conduct these webinars which are purely education and nothing else. तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में बात करूं, ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? लैगिंग वर्सेस लीडिंग सिग्नल्स, ठीक है. अभी लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? थोड़े रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. मतलब क्या होता है कि जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया या MACD क्रॉसओवर हो गया, तो ये क्या होता है, ये काफी ये काफी after a lot of price movement has already happened, it will give you the signal. That trigger will come after some bit of the price movement has already happened. Okay, so the signal is the move has already happened a little bit. The result can be late entries or you're chasing price after an up move or after a down move. Now is it all bad? So let me देखो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करने आया हूँ. लैगिंग एंड लीडिंग सिग्नल्स में दोनों का अपना अपना फायदा होता है. लैगिंग सिग्नल्स लाइक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या MACD क्रॉस या और भी जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है जैसे सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट, ये सारे के सारे या आपके कप एंड हैंडल का भी जो होता है फॉर्मेशन ऑफ अ पैटर्न, ये काफी सारा नीचे से एक अच्छा खासा मूव आता है. लाइक से फॉर एग्जांपल लेट मी शो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. लेट्स से हम लोग एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. ये कप हुआ और ये हैंडल हुआ, ये उसका नेकलाइन हुआ. ओके, सो नाउ you trade here, right, at breakout, which is this point. So what has happened here is यहां से एक अच्छा खासा move is already gone up, right. This move has already come. Now once the pattern is complete, basis certain parameters like volume कितना है, pattern clear है कि नहीं, so on and so forth, you take a trade here. This is a lagging setup. Now is it wrong? No, the answer is this is perfectly valid. All right, so we will wait for the pattern to complete and then take a punt. Now a leading indicator, so is it bad? No, it is not bad. You're waiting for a certain pattern to complete and then take, right, then take a trade. So ये lagging indicator में भी कोई problem नहीं है as such, but you need to understand which are which kind of setups, right. अब दूसरा क्या setup होता है? Leading indicators. Now what are leading indicators? They are little predictive in nature. Now उसमें क्या होता है? What do we look at? We look at divergences. We look at if the price falls, let's say there is this support area and price ऊपर जाके नीचे आ रहा है, right. You take a punt here because technically this is a downtrend, but since it has come into a previous support area, आप क्या करोगे? यहाँ पे long जाओगे, right. Now this is predictive in nature कि भाई you're saying that there is this support from where the market will turn, from where the prices will likely turn. So now this is predictive in nature. All right, you're going against the trend. Okay, here you're trend following, you're going against the trend. तो दोनों में ये key difference है. Is one right and the other wrong? No, both are right. Both have their own idiosyncrasies, their own feature sets. You need to be aware of them
एंड इफ यू वांट टू ट्रेड बोथ द कॉम्बिनेशंस, आपको अलग अलग रूल सेट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये सेट पीसेस तैयार करके आप ट्रेड करो। ठीक है, नाउ द सिग्नल इज द मूव इज अबाउट टू हैपन। ये अप मूव का आप एकदम बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हो। अर्ली एंट्रीज हो सकते हैं, एंटिसिपेटिंग रिवर्सल्स। So you are looking at these reversals, you get early entries, मतलब आप bottoms and tops, troughs and tops कैच करने की कोशिश करते हो। दोनों में फर्क क्या है? इसमें क्या है, you get confirmation entry। ठीक है, now since you get confirmation entry, the chances that these will fail reduces। यहां पर क्या है, you do not get confirmation entry, you take counter, mostly you take counter trend trade। Since they are mostly counter trend trade, the chances that the failure rate is going to be high. While the risk reward is high, the failure rate is also likely to be on the higher side। क्योंकि भाई आप मतलब there are classic ways to call it ना, आप you're trying to catch a falling knife, you're trying to catch the reversal, so on and so forth। तो ये दोनों अलग अलग set pieces हैं, okay, which we will try and work today। What we are trying to do, we are trying to look at the leading signals, the predictive nature। 2 weeks just before Diwali, we had done a trend following set piece, which is already available on the channel. So you can go back to the playlist and check that out. Okay. All right. Now let's continue. Before I do that, since there is a good amount of participation, let me check with the questions. Yes, Alex, we will check that out also। वैभव, एक्सपायरी में कैसे काम करना चाहिए, कल हम लोगों ने एक सेशन किया था स्ट्रैडल्स ट्रैंगल्स का। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट वॉच दैट सेशन व्हेनेवर यू फाइंड टाइम। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली एक टेक्निकल सेट पीस के बारे में बात कर रहे हैं, जो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस के टॉपिक को लेके है। ऑलराइट, नाउ लैगिंग इंडिकेटर्स का एक रिएक्टिव एग्जांपल क्या है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट, अगेन एज पर सेबी मैंडेट, I am not showing you any live prices, nor am I showing you the name of the charts, क्योंकि ये random charts हैं। लाइव मतलब रियल चार्ट्स हैं बट रैंडम है। आप सिर्फ वो पैटर्न्स के ऊपर फोकस करेंगे rather than ट्राइंग टू प्रिडिक्ट या ट्राइंग टू डिसाइफर कि ये कौन सा चार्ट है, चलो मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूँ। सो सिंपल डिस्क्लेमर इज, आप वो सब दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरनेशनल चार्ट्स हैं। ये S&P 500 या नैस्डैक या जापानीज मार्केट या कहीं से भी मैंने लिया है, इंडियन मार्केट के एक भी चार्ट नहीं। हाउएवर द टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इंडिकेटर्स वर्क ऑन ऑल चार्ट्स। ओके, सो नाउ इफ यू लुक एट दिस लैगिंग इंडिकेटर, जो गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं ना, इफ द 50 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉसेस द 200 पीरियड मूविंग एवरेज, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। इफ इट क्रॉसेस अबव, मतलब नीचे से ऊपर कट करता है, तो ये बुलिश क्रॉसओवर होता है, जिसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। एंड अगर वही चीज उल्टा होता है, इफ द 50 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉसेस द 200 पीरियड मूविंग एवरेज नीचे की तरफ, तो उसको डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। प्रकाश जी, ये रिलायंस का भी चार्ट नहीं है, एज आई टोल्ड यू दिस आर ऑल इंटरनेशनल चार्ट्स, जिसमें हमारे कोई चार्ट्स नहीं है। तो ये पोर्शन जो है, दिस इज डेथ क्रॉसओवर। ओके, नाउ दिस इज द गोल्डन क्रॉसओवर। अभी गोल्डन क्रॉसओवर दिया है जब प्राइस था 157। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जी, ये 157 का अगर प्राइस है तो ये रिलायंस का तो चार्ट हो नहीं सकता, करेक्ट। एनीवेज, आप लोग चिंता मत करिए, ये सारे के सारे इंटरनेशनल चार्ट्स हैं, तो हम लोग कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो वी आई एम शोइंग यू ऑन चार्ट्स ओनली, एंड वैभव वी विल नॉट बी लुकिंग एट लाइव चार्ट्स। सो अगर आप देखिए, प्राइस जो है, प्राइस हैज ऑलरेडी मूव्ड अप बाय, अगेन वैभव, टाइम फ्रेम और लाइव चार्ट्स का मतलब नहीं है, यू आर जस्ट लुकिंग। सो एनीवेज, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम एंड वी आर लुकिंग एट द पैटर्न दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हियर। नाउ इफ यू लुक एट द प्राइस मूव, सिग्नल हैज कम आफ्टर अ 60% मूव। ये बॉटम से अगर मैं यहां तक मानूं, जो सिग्नल ने यहाँ पर क्रॉसओवर दिया है, सो देयर वाज ऑलरेडी अ 60% मूव फ्रॉम द बॉटम। ओके, नाउ
Has the price gone up after that also? The answer is yes. So did this signal fail? The answer is no. It worked in its capacity कि भाई ये सिग्नल कंफर्मेशन के बाद देगा, उसके बाद भी ये प्राइस ऊपर की तरफ गया है, राइट? सो इज इट अ फेलियर? द आंसर इज नो. इट हैज इट्स ओन इडियोसिंक्रेसीज. इसने 40% मूव के बाद आपको सिग्नल दिया है, राइट? सो व्हाट डज इट से? इट इज अ लैगिंग. इट इज लैगिंग बिकॉज वो एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ द मूव हो जाता है, उसके बाद कंफर्म्ड सिग्नल देता है. तो while its probability of doing well increases, it has already given up a lot of potential gains. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें दोनों में क्या इशू हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, नाउ अ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल अगर आप देखें तो ये आरएसआई का एक डाइवर्जेंस चार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है? प्राइस वाज मेकिंग हाई, फिर बाद में एक हायर हाई बनाया. उसी टाइम अगर आप देखें आरएसआई ने मारा एक हाई और एक लोअर हाई बनाया. सो ये जो होता है ना, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल तरीके से डाइवर्जेंस समझिए. प्राइस इस तरह से जाएगा एंड कोई भी ऑसिलेटर आप देखेंगे, आरएसआई, स्टोचैस्टिक्स या कोई भी चीज, अगर वो इस तरह से जाएगी तो इसको बोलते हैं, इन सिंपल टर्म्स दिस इज नोन एज divergence. Okay, so what has happened here? Now you would say okay, एक पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर्स का, वी विल टेक अ पॉइंट हियर, वी विल गो लॉन्ग हियर. बट हुआ क्या? बिकॉज देयर वाज अ डाइवर्जेंस इन द सिग्नल, इट काइंड ऑफ इंडिकेटेड कि ये जो अपमूव आ रहा था इस पर्टिकुलर अंडरलाइन में, द अपमूव इज एग्जॉस्टेड. सो ये नियर द फैग एंड ऑफ द मूव है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनाना रिस्की हो सकता है. क्या हुआ उसके बाद? इफ यू नोटिस, after this divergence got confirmed, यहाँ पर from this top to this bottom there was a 40% fall in this counter. ठीक है? तो डाइवर्जेंस अगर आप यहां से लॉन्ग हुए होंगे, या समझो ये पैटर्न आपने एक पकड़ा होगा, ओके, लेट्स जस्ट से एक यू नो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पकड़ा, यहाँ पे ब्रेक लिया आपने, ठीक है? आप फिर क्या करोगे? इफ यू कंटिन्यू राइडिंग दिस पैटर्न एंड नॉट एंड इग्नोर दिस डाइवर्जेंस, you would have given up all the gains. Okay, otherwise if you had continued here and seen this divergence, इन तीनों कैंडल्स में कहीं पर भी निकल जाते, you would have preserved your gains. Right? So a divergence not only helps you take counter trend aggressive trades, it also tells you when to get out of a trade, when to book your profits. ये एक डाइवर्जेंस जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम कर सकता है आपके लिए, है ना? क्योंकि यहां पर आप निकल जाते तो आपका ये प्रॉफिट का अप मूव, यू वुड हैव मेड दिस. अगर आप इसको वेट करते तो यू वुड हैव गिवन अप ऑल द गेन्स. एंड यहां पर इंडिकेशन ऑलरेडी आ गया था. देयर वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट इज शोइंग डाइवर्जेंस सिग्नल्स. आर वी क्लियर? तो ये एक एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने. तो प्रकाश जी, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डाइवर्जेंस? देखो मैंने कोई मेजर नहीं किया है. कई सारी टेक्स्ट बुक्स बोलती हैं कि देयर इज अ 60% chance that these things will work. Some of the textbooks that I have read give you 60% and trend following में 65-67% के आसपास बताते हैं. ये एक मोटा मोटी एफिकेसी बोल सकते हैं, ठीक है? बट मोर देन द predictability, more than the accuracy of the set piece, what you need to also understand is what is your risk reward ratio, what is going to be your, देखो, if you are trading between the main difference between trading and investment is that you have a clearly defined, can somebody tell me what is the clear difference between trading, कलर चेंज कर देता हूं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट?
one main difference is you have an entry, you have a stop loss, and you have a target also. In investments, you mostly have entries. Okay. If the stock goes down, you will probably have averaging concept, which will come here, and you will mostly have a target. ठीक है. इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस बहुत कम लगाते हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग मतलब रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग मोस्टली स्टॉप लॉस नहीं लगाते. ट्रेडिंग में क्या होता है, यू हैव दिस 1, 2 and 3 बिफोर यू टेक एन एंट्री. से फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड मार रहा था. ठीक है. ये बोलते हैं भैया 1, 2, 3, 4 कैंडल्स का ये लो ब्रेक किया, तो यू एंटर शॉर्ट हियर. ठीक है. इफ यू एंटर शॉर्ट हियर बेसिस divergence, okay, what will be your stop loss? The stop loss is this, the recent high. Yes or no? So if this is, let's say 10 rupees, okay, your target will typically be 20 rupees or nearest support. वैभव, ये ऑप्शंस में भी काम करता है. सी, अ चार्ट पैटर्न विल वर्क ऑन एनी टाइम फ्रेम. The smaller the time frame that you choose to trade in, the more number of whipsaws it will give you, because there is a lot of noise in the shorter time frame charts. Okay, तो अगर आप इंट्राडे ऑप्शंस में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो you can definitely trade the divergences, and a lot of people do trade divergences, but you need to be aware कि इसमें because the time frame is smaller and on top of it you are looking at a लीडिंग इंडिकेटर, अ प्रिडिक्टिव इंडिकेटर, तो मतलब आपका फेलियर रेट काफी हाई होगा, बट जब वो काम करेगा यू विल गेट वेरी स्ट्रॉन्ग गेन्स ऑल्सो. तो दोनों चीजें, इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ सेटअप. तो अब अगर आप सोच रहे हो कि स्कैल्प करना है, यू वांट टू गैमा स्कैल्प और यू वांट टू बाई ऑप्शंस ऑन 1, 3 और 5 मिनट टाइम फ्रेम यूजिंग डाइवर्जेंस एज अ कॉन्सेप्ट, आप कर सकते हो. ठीक है, बट इसमें फेलियर रेट काफी होगा. ओके, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट. नाउ लेट्स मूव अहेड. What is divergence? The core idea is price and momentum should move together. मतलब प्राइस है और उसका जो मोमेंटम है वो साथ में चलना चाहिए. See, most of the technical indicators that are available in the market today are basis two things. एक तो प्राइस है और दूसरा वॉल्यूम है. So as a technical analyst, you're looking at price and volume. If you are a technical analyst come a derivative analyst, you are also looking at the options data. Okay, जिसमें OI आ गया, PCR आ गया, मैक्स पेन आ गया, so on and so forth, implied volatilities आ गया, IVP. So that is a whole set of ecosystem that you will include in your technical and derivative analysis. But purely as a technical analyst and as a price action reader, you are only concerned with price, volume and उनसे related, उनसे बनाए गए कई सारे indicators. Okay. So if you're looking at pure price, you look at the cup and handle, you look at the triangle, flag, pennant patterns, vagara vagara, right? And if you're not going to do that, and you're looking at indicator-based triggers and signals, you will look at moving averages, you will look at RSI, Bollinger Band, super trend, so on and so forth. All right. Now, so Prakash, लाइव चार्ट्स पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे सर. वी विल ओनली फोकस ऑन स्टैटिक डेटा. ओके, नाउ प्राइस एंड मोमेंटम शुड मूव टुगेदर. मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, उसका मोमेंटम भी ऊपर रहना चाहिए. मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो भी ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. तो वो मोमेंटम में है बोलते हैं, राइट. बट डाइवर्जेंस इज द वार्निंग साइन दैट दे आर डाइवर्सिंग. मतलब वो अलग अलग जाना चालू कर देते हैं. Let's understand the psychology behind divergence.
अगर आप प्राइस चार्ट देखें इधर, ये दोनों तरफ देखें, दो दीज टू डायग्राम्स, द फिगर अबाउ द ऊपर वाले जो फिगर्स हैं वो प्राइस लाइन है, नीचे वाले फिगर है एक इंडिकेटर है। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर आप समझ लीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं दिखाया कि भाई ये कौन सा इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक्स भी हो सकता है, आरएसआई भी हो सकता है, कोई भी हो। ऊपर वाला प्राइस लाइन है, नीचे वाला इंडिकेटर है। अब प्राइस लाइन क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसी का जो इंडिकेटर है, जो मोमेंटम इंडिकेटर है, जो ऑसिलेटर है, वो जो है वो थक रहा है, इट इज गेटिंग टायर्ड, इट इज लूजिंग इट्स स्टीम। तो उसके बाद क्या होता है देखें, प्राइस एक्शन ऑल्सो इवेंचुअली फॉलोज द मोमेंटम। यहां पर राइट हैंड साइड में देखिए प्राइस नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, राइट। बट इफ यू लुक एट द मोमेंटम इंडिकेटर, वो गिर नहीं रहा था, right? It was kind of flattening, it was kind of giving support, taking support at a particular level, right? What is that telling you? Ki okay, while the price is trying to fall continuously, the momentum at which it is falling is now getting over. So matlab we are nearing the bottom. So if you found something around here as a support area, okay, if you found something here as a support area, okay, what you would have done, you would have gone long at support. By going long at support, because there was this divergence in the price and the indicator, you would have captured this movement. Okay, so this is how you will understand the concept of divergence. थोड़े और examples देख लेते हैं. What is a bearish divergence? A bearish divergence is a warning at the top. एकदम टॉप पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस दिखेगा, ठीक है। आपको 52 वीक हाई हो सकता है या पैटर्न हाई हो सकता है। जब भी कोई पैटर्न बना रहे हैं आप, लेट्स से देयर इज अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, और अ कप एंड हैंडल या ट्रायंगल पैटर्न, या कोई भी ऐसा आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो कि it is going to give a breakout on the top, you will see that prices are making higher high. However, what you notice is the oscillator that you track is showing a divergence signal, is giving a divergence signal. So what can you do? You can wait for the divergence to get over, or you can wait for the prices to come down at a support level and then continue the trade. Divergence ये नहीं बोलता है कि आपका the trend is reversing. All it is telling you is the trend, while being intact prima facie, is getting tired, and there is a chance of a profit booking if the trend is up, and it will come to a support zone from where you can pick up the stock or the counter, right? So bearish divergence, a warning at the top, prices are showing higher highs, indicator is showing lower lows. The psychology behind this is, the market psychology is, the price is making a new high but with less enthusiasm, less momentum, and hence the buying power is drying up. अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल में देखा, a hope at the bottom, you are trying to catch the bottom here, right? Prices are showing lower low, indicator is showing higher low, or it is flattening. Okay, now the psychology here is prices are making a new low, but fewer people are now selling it. मतलब the selling pressure is getting less. तो सेलिंग प्रेशर कम होता है तो मार्केट क्या करता है, एक बॉटम फाइंड करता है, बॉटम फाइंड करता है, साइडवेज रहता है, एंड फ्रेश बाइंग पावर आता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। उसका लीडिंग इंडिकेटर होता है योर ऑसिलेटर डाइवर्जेंसेस। Okay, now how do you read divergences with RSI? सबसे पॉपुलर, like somebody else also, like प्रकाश भाई also asked us in the chat box कि सबसे पॉपुलर डाइवर्जेंस का इंडिकेटर कौन सा है? The obvious answer is RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, एक स्लाइड RSI के नाम पे कर देते हैं बिकॉज हमारा जो हीरो इंडिकेटर है वो RSI होने वाला है आज। नाउ दिस इज द फर्स्ट टूल दैट वी विल बी यूजिंग। सिंपल 3 टूल्स ही लेंगे, RSI, बॉलिंजर बैंड्स एंड वॉल्यूम एज अ कंफर्मेशन टूल, और हम लोग एक सेट केस बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? नाउ
relative strength index means it's a momentum oscillator indicator है, and it's an oscillator also. It is a momentum indicator and it also oscillates. Oscillator क्या होता है? एक बाउंड होता है बिटवीन 0 एंड 100, इसकी बंदिश है, इसकी बाउंड्रीज है. तो इट विल ऑसिलेट बिटवीन 0 वैल्यू एंड 100 वैल्यू. Moving average is not an oscillator. It can continue to go up, it can continue to go down till 0. नीचे की तरफ तो चलो 0 है, पर ऊपर की तरफ there is no limit. मार्केट जितना ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज भी ऊपर ऊपर क्रॉस करेगा. बट ऑसिलेटर जो है वो 0 या 100 के दायरे के अंदर ही रहने वाला है. सो इट इज अ ऑसिलेटर, राइट. मोमेंटम इज एन इंडिकेटर ग्रुप जिसमें RSI इज एन ऑसिलेटर. से फॉर एग्जांपल आपका MACD is not an oscillator, right? It is a momentum indicator, but MACD can continue to go up or it can continue to go down as the market of that underlying stock is performing. तो उसमें oscillation नहीं, उसमें बंदिश नहीं. ओके, ये डिफरेंस होता है एक ऑसिलेटर एंड अ नॉर्मल इंडिकेटर के बीच में. नाउ RSI has a bound of 0 to 100. It measures the speed and change of price movements to gauge momentum. टिपिकल इंडिकेशन, टिपिकल रीडिंग्स क्या होती हैं भाई? 70 के ऊपर हुआ तो ओवरबॉट है और 30 के नीचे हुआ तो ओवरसोल्ड है. ये सिंपल डेफिनेशन होता है RSI का, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, कि मार्केट इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी या मार्केट इज इन अ ओवरबॉट टेरिटरी. हाउ डज दैट कम अबाउट? इट इज एसेंशियली व्हेन यू लुक एट अ मोमेंटम इंडिकेटर लाइक RSI, यूजुअली अबव 70 आप बोलोगे मार्केट अभी ओवरहीटेड है या मतलब ओवरबॉट है, वाइल द मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग. थोड़ा यहाँ पर समझ के चलना चाहिए. या मार्केट अगर 30 के नीचे चले जाता है RSI तो बोलोगे यार काफी बिकवाली आ गई, थोड़ा समझ के चलो. यू शुड नॉट बी फ्रेश सेलर्स एट दिस लेवल पॉसिबली, राइट. तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया, एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो गया. बट नॉट जस्ट ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट, वी यूज इट टू फाइंड डाइवर्जेंसेस. ये थोड़ा प्रो वर्जन होता है जहां पर हम लोग इस ऑसिलेटर को ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड तो समझ गए, ठीक है. ओवरसोल्ड है, 30 के नीचे आ गया. अब हम खरीदें कब? उस अंडरलाइन को खरीदना कब है, राइट. ओवरसोल्ड आ गया, ये 30 के नीचे आ गया, ये समझ में आ गया. बट इसको अभी एंट्री कब लें? वो एंट्री लेने के लिए while it is being in that oversold territory, if you find a positive divergence or a bullish divergence in that, right? How? Suppose ये 30 के नीचे इस तरह से रोल रहा है, प्राइस जो है नीचे नीचे जा रहा है, बट प्राइस एक सडन मूवमेंट अपसाइड दिखाता है, ठीक है, एंड RSI ऊपर की तरफ जाना चालू करता है. दैट इज योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस. So divergence is when the price and RSI move in opposite directions. Price hits a new high, RSI makes a low. It signals weakening momentum and a potential trend reversal. Let's look at certain examples. बहुत clean charts हैं ये, right? काफी मेहनत से इनको ढूंढी है ताकि you get the idea that what we are trying to understand, right? Now, again, चार्ट किसका है, क्या टाइम फ्रेम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये रेड एंड ब्लू लाइंस हैं. प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, RSI इज मेकिंग लोअर लो, लोअर हाई, एंड उसके बाद प्राइस क्या दिखाता है? एक बड़ा सारा डाउन मूव दिखाता है, विच इज कॉजिंग द RSI टू कम हियर. तो दिस डाउन मूव इज कंफर्म्ड. यहां पर अगर आपने समझो लॉन्ग लिया होता एंड यू गेट आउट हियर, यू वुड हैव सेव्ड योरसेल्फ ऑफ दिस पेन. अंडरस्टूड? तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल है. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. अच्छा खासा मोमेंटम है, सो दिस इज नॉट अ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक, दिस इज अ बुलिश काउंटर. यस और नो? बहुत क्लियर दिख रहा है कि बुलिश काउंटर है. अब बुलिश काउंटर में एज अ ट्रेडर, सी ये डाइवर्जेंसेस, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ट्रेडर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं अगर आप डेली या उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे हो. इफ यू आर एन इन्वेस्टर, हाउ कैन यू यूज दीज डाइवर्जेंसेस टू योर बेनिफिट? इफ यू आर एन इन्वेस्टर, you should be looking for these kind of divergences on higher time frames like monthly, maybe weekly, but primarily if you look at these kind of divergences on monthly charts,
वहां पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिखे तो आपको काफी सारा पेन, हाँ, बचा सकते हो अपने, ठीक है। एंड अगर इस तरह का पॉजिटिव डाइवर्जेंस कोई मंथली चार्ट पे, विच वी विल डिस्कस इन सम टाइम, अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखे मंथली चार्ट्स पे, दे आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू गो लॉन्ग इन दोस काउंटर्स which will give you very handsome profits. Okay, now look at this bearish divergence in an uptrending stock. तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नहीं किया है अंडरलाइन को. What you will do is, when you see this kind of a bearish divergence and a final candlestick pattern confirms it, you will simply hit your trailing stop loss, get out of that. Say for example, आप कैसे हटते इसमें से? What are the multiple methods? Let's say there was this trend line that the counter was falling. ठीक है, let's say you are following this trend line. I'm just randomly drawing this trend line, ठीक है. एंड यहां पर क्या हुआ, it broke this trend line here. Okay, तो यहां पर जैसे ये ब्रेक हुआ and you are seeing that there is a divergence, you will say your trend has broken along with negative divergence. I will get out of this counter in which I have been long for some time. ठीक है, what will that do? It will save you this entire pain. तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉफिट्स में काम आएगा ये. ओके, नाउ let's look at bullish divergence. We have seen this example. Price was falling very sharply. RSI was not falling surprisingly. तो ये क्या होता है, ये हिंट होता है. Should you immediately start buying here? Because यहाँ पर भी दिख रहा था नहीं ना. What you will do is you look for, see how will you trade a divergence? Through the RSI, you can definitely find a bottom. See, what will you do? You will look at these things. You will look at कि भैया market क्या है? Market is kind of, can you see that market had reached near a support area? Yes or no? है कि नहीं? Market एक support area ये था. Let's say जैसे candlesticks दिख रहे हैं इधर. Market एक और support area. So can we say that this was the support area for the market for this counter, whichever counter it is, right? What are we also seeing? We are also noticing that this is support area, and we are seeing positive RSI divergence. Why? Because prices are falling, RSI is kind of not falling. It is continuing to hold its ground. Yes or no? अब ये सपोर्ट एरिया में है, यहाँ पर एक सपोर्ट है जहां से मार्केट वापस गया, और यहाँ पर भी है. तो दिस इज अ एरिया ऑफ सपोर्ट रादर देन अ सपोर्ट लाइन. ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक एरिया हो गया, एक मोटा मोटी. दिस एंटायर एरिया इज अ लाइक अ सपोर्ट एरिया बोलते हैं, या कुछ लोग डिमांड सप्लाई ट्रेड करते हैं, तो यू विल कॉल इट अ डिमांड जोन. राइट नाउ, एज अ ट्रेडर you will not trade this entire fall, but if you want to go long, you will look at 2-3 things. What will you look at? Price in near support or demand zone. This is your checklist. Second, okay, RSI, since you are trying to catch the bottoms, positive divergence, this is your second checklist, right? आपका फर्स्ट वाला आंसर था प्राइस इज नियर अ सपोर्ट एरिया, यहां तक आ गया था. दिस कैंडल पे आपने देखा कि प्राइस कम टू अ सपोर्ट एरिया. RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है. द आंसर इज यस. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी योर ट्रिगर? अब जो ट्रिगर करोगे ना, ट्रिगर टू गो लॉन्ग, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? हाउ विल यू नो? Simple. You will look at positive candlestick pattern. ये दिख रहा है? What is this? What are these two candles? These two candles are known as, क्या बोलेंगे इसको? Bullish candlestick pattern.
डार्क क्लाउड कवर होता है ऊपर की तरफ, उसका ऑपोजिट हो गया यहाँ पर. आई कांट रिकॉल द नेम, बट इफ somebody can help me out. But you understood what I am trying to tell you? Candlestick patterns, not chart patterns, candlestick patterns, because candlestick patterns work beautifully in conjunction with divergence signals. Why? Candlestick patterns plus divergence works beautifully. Why do I say this? Because candlestick patterns are essentially reversal signals. Yes or no? Now recall this. Hammer. क्या हो रहा है? प्राइस नीचे जा रहा है, हैमर बना, रिवर्स हुआ प्राइस, ठीक है. एनगल्फ, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक बड़ा एनगल्फ आया, रिवर्स हुआ प्राइस. करेक्ट. यू कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स. शूटिंग स्टार, ठीक है, प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, शूटिंग स्टार बना. क्या होता है? प्राइस टिपिकली फॉलोज डाउन. राइट. आर वी चेंजिंग द एंटायर पैटर्न? नो. होता क्या है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, ठीक है, प्राइस नीचे आता है, वापस एक सपोर्ट एरिया में आता है, देन अगेन इट गोस. So this is how the market functions. This is how the market moves. So ये reversal patterns जो हैं, you will use them along with divergence concept. So it will work beautifully. So randomly आप नहीं लेना है कि भाई divergence आ गया आप trigger मार दो, नहीं. Look at these kind of factors. Clear? चलो let's move ahead. Now bullish divergence का एक और एग्जांपल दे रहे हैं. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है चार्ट. एक बॉक्स, एक रेक्टेंगल पैटर्न में मार्केट ये अंडरलाइन चल रहा था, and RSI was slowly moving up. So when will you trade this kind of a pattern? Simple है ना? When you break this box. Clear? Enter at breakout. Yes, positive divergence है, and it breaks out of this rectangle pattern. This will be your entry, this will be your stop loss. If this is 1, this will be your target. Simple. Or your nearby resistance will be your target. So when you look at the concept and not really look at the live charts and get excited about taking the actual trade right now, ये क्लासरूम है, इसमें आप समझेंगे कि किस तरह से मार्केट में, किस तरह से एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है. फोकस करके हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी ले रहे हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं. ठीक है. सो क्लियर कट सिग्नल्स है, क्लियर कट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बिकॉज कोई भी चीज विजुअली दिखाऊंगा, कोई भी चीज आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाएंगे, तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड ऑब्जॉर्ब इट बेटर एंड रिमेंबर दोस कॉन्सेप्ट्स बेटर, rather than me simply giving you textbook knowledge. All right, chalo. Now confirming exhaustion reversal with Bollinger Bands. अभी हम लोगों ने RSI का बहुत beautiful देखा, how it works. But if you want to use this with a confirmation tool, something like a Bollinger Band or a Stochastics RSI or a simple Stochastics पे ले लो, कोई भी आप ऐसे ऑसिलेटर या मोमेंटम देख लो, वॉलेटिलिटी बैंड्स देख लो, बॉलिंजर देख सकते हो, केल्टनर चैनल देख सकते हो, या एक और कौन सा डॉन्चियन चैनल देख सकते हो, कोई भी बैंड्स देख सकते हो आप, तो उसके बेसिस पे भी आप ये काम कर सकते हो. ऑलराइट, व्हाट इज दैट? दिस इज आवर टूल नंबर 2. तो हम लोगों ने बोला 3 इंडिकेटर को लेके एक सेट पीस बनाएंगे. नाउ बॉलिंजर बैंड्स आर अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी. Okay, the bands widen when volatility is high and narrow when it is low. John Bollinger, जो खुद भी एक CMT है, by the way, he is the one who has invented these bands. उन्हीं के सरनेम से है Bollinger bands. He's alive. Okay, he comes in these in our CMT sessions.
ही इज बेस्ड इन यूएस, न्यूयॉर्क आई थिंक, एंड वो कई बार टॉपिक्स लेते रहते हैं ड्यूरिंग आवर सीएमटी सेशंस, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू लिसन टू हिम. So John Bollinger is the one who has invented these bands. It's a measure of volatility. These are known as volatility bands. The bands widen when volatility is high and narrow when it is low. So in an uptrend, a strong trend will prices will walk the upper band. Okay. In a downtrend, the prices will tend to walk the lower band. Okay. ये जो अब I'll show you a couple of examples which will give you visually what I'm trying to tell you. Before I do that, there is a question here by Alex. What are factors influencing RSI movement? Say if the average volume is high, will it create a spike in RSI? No, RSI is not. RSI does not have anything to do with the volumes. RSI has to do with the rate of change. मतलब जो daily change हो रहा है ना, if that change is incrementally higher, your RSI will continue to go up. Okay. If the prices are continuing to go up, but with smaller rate of change on a daily basis, your RSI will start dipping or flattening. It is a rate of change of the prices alone. So if the prices continue to increase with increasing difference, मतलब अगर let's say 0.5% से increase हो रहा है, 0.5%, 0.5, 0.55, 0.6, 0.75, 1%, ऐसे अगर increasing rate से change हो रहा है, your RSI will start moving up and up and up. But if the rate of change, while the underlying is going up, but if the rate of change is 0.5, 0.4, 0.3, it is moving up, but with a slower rate of change, RSI will start dipping. That's the only way RSI will calculate. Okay. Now, Bollinger Band setting is standard. जो इंडिकेटर में आता है, जो आपके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आता है, या अपस्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू के साथ जाके आप करेंगे, वो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का लेके आप करेंगे. आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि देयर इज द सीक्रेट सॉस कि आरएसआई को जो है 70 के बदले 65 कर दो, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. ऐसा कुछ नहीं है. आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, उसके बेसिस पे काम करो, तो भी काम होता है. यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील. अगर किसी ने टायर्स गोल बनाए हैं, आपको उसको स्क्वायर बना के या कोई दूसरे शेप में बना के ट्राई नहीं करना है. उसी से आप अच्छे से चलिए ना, सेफली चलिए, हो जाएगा, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ. सो हाउ डू द बैंड्स लुक? नाउ these are two examples of a volatility band. Upper band red color, middle band which is your simple moving average, बीच का blue line, and lower band is the green line. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट देखेंगे, द बैंड्स आर एक्सपैंडिंग, तो वोलेटिलिटी इज एक्सपैंडिंग, प्राइसेस आर मूविंग एट अ हायर, द प्राइस चेंज इज एट अ हायर क्लिप. नैरोइंग बैंड मतलब जो डेली मूवमेंट है ना, डेली वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बैंड स्क्वीज. जो आप बैंड स्क्वीज बोल लो, या हाउ विल यू अदरवाइज कॉल दिस, व्हाट इज द अदर वे यू विल कॉल दिस? दिस इज नोन एज squeeze. Okay, band squeeze. What is the other way you will identify this kind of a pattern? Can somebody quickly tell me? Rectangle pattern or range bound markets? Simple. So देखो, everything can be correlated. All right. So when the bands are squeezing, when they are becoming narrower, that means market is moving within a range. And when the market moves within a range, what is the next logical thing? Market is going to give you a breakout. After the breakout, it catches momentum. If it catches momentum, it goes to a certain level. Then it gets exhausted, it gets tired, it will want to rest. Barabar? That kind of rest is shown by your divergences. And once it rests and comes back to a support area, that is where you catch those falling knives and again catch the trend. So ये पूरा एक market का ecosystem है, जो आपको, when you read up all of these things, when you understand the entire concept of technical analysis, you will understand and appreciate how beautifully it has been constructed and evolved. Right. Now,
Now what is the walking of the bands? Can you see this? In an uptrend this continues to walk. ये देखो ऊपर के बैंड को पकड़ के चल रहा है. दिस इज कॉल्ड वॉकिंग अप द अपर बॉलिंजर बैंड. ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चल रहा है स्टॉक. Now in a stock which is showing very strong signs of downward movement, this is the kind of walk that it does. So this is a technical मतलब एक स्टाइल से बोलते हैं कि it is walking down or walking up the band. Now what is the divergence signal? The price makes a new high, जो हमारा RSI divergence बता देगा, but fails to touch the upper band. So you are combining not only RSI but you are also checking कि यार if it is continuing to walk the upper band, उसके बाद क्या हुआ? Let's say for example यहाँ पे क्या हुआ? It was continuing to walk the band. फिर बाद में क्या हुआ? RSI ने divergence दिखाया and market also gave this reversal pattern. तो यहाँ से ये मीन तक गया. So this is called as mean reversion trade. छोटा ट्रेड है but this is also a trade that can be done. और कई लोग करते भी हैं इसको. Now psychology is this is a non-confirmation. The price is making a new high but with less volatility and less conviction. It's a sign of exhaustion. The trend is converging back to the average. Mean reversion होता है यहाँ पर. Mean reversion मतलब क्या है? So for example the market are walking the upper band. फिर बाद में क्या होगा? What is the typical area that you are looking for this price to come? Yes or no? What will happen here? The price will come. It will give a mean reversion and I will long at support. This was earlier resistance. It got flipped into support. ये resistance था, यहाँ पर breakout आया, ठीक है? Breakout is now coming to retest at support from where you will go long again. So this is how technical analysis works. एक ही चार्ट में multiple concepts आपको समझ में आ सकते हैं. Now final thing is volume. How will you look at volume? The golden rule is volume should confirm the trend. मतलब अगर मार्केट में मोमेंटम है, it should ideally be confirmed with rising volumes. If the market is going down, you will find momentum in volume. ठीक है? Volume is a very simple indicator of momentum. If the market is showing upward momentum, volume should also continue to be on a higher trajectory. मतलब volume should continue to slope up. Volume moving average जो volume का लगाते हैं, that will show you upward momentum. And अगर market नीचे गिर रहा है, the volume graph should be continuing to increase, which will tell you that this move is in momentum. अगर volume flatten होता है, it is the first warning signal कि भाई यहाँ पर जो है ना, ये जो fall आ रहा है, ये rise आ रहा है, ये अच्छे खासे volumes के साथ नहीं है, तो maybe there is some false signal here. Now, a new high has less participation. The crowd is not joining the rally. This is a smart money distribution, not a real breakout. कोई भी breakout का golden rule क्या होता है? It should be accompanied with strong volumes. There has to be a strong participation. Now, इसमें एक further pro tip समझ लो आप, मैं जो आपको share करूंगा. You don't just look at the candle and immediately jump on it. If somebody is an investor, a swing or a positional trader, और आपको कोई breakout दिख रहा है, wait for that end of the day or take a small bet. Check the delivery data, half copy, and check what is the delivery percentage of that counter. कई बार क्या होता है, वो इंट्राडे वॉल्यूम बहुत होता है उसमें, बट डिलीवरी परसेंटेज छोटा होता है, राइट? अगर डिलीवरी परसेंटेज छोटा है तो पोजिशनल या स्विंग में वो डिलीवरी काउंट नहीं होगा. वो वॉल्यूम बार जो बहुत बड़ा दिख रहा है ना, वो काउंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसमें इंट्राडे में टर्नओवर करके लोग निकल गए. कई सारे HFTs हैं जो इंट्राडे में कोई पार्टिसिपेट करते हैं और एंड ऑफ द डे निकल भी जाते हैं. तो वॉल्यूम्स कैन नाउ, बिकॉज मार्केट इवॉल्व हो रहा है, तो ये थोड़ा हमको भी समझना पड़ेगा कि इंट्राडे में वॉल्यूम्स काफी हो सकते हैं, बट डिलीवरी बेसिस पे वॉल्यूम्स उतने नहीं होते हैं.
तो अगर डिलीवरी बेसिस में आप देखो 20% 30% का डिलीवरी है, तो आप उस काउंटर पे थोड़ा ध्यान रख के काम करो, ठीक है। दैट इज अ रेड फ्लैग। रेड बोल लो, ऑरेंज बोल लो, इट इज डेफिनेटली नॉट अ ग्रीन फ्लैग। अगर डिलीवरी परसेंटेज 50% के ऊपर है, ठीक है, फॉर दैट डे, जब आपका ब्रेकआउट आया, जिस कैंडल पे आप भरोसा कर रहे हो, उसमें अगर 50% से ऊपर एक्चुअल डिलीवरी लिए, लोगों ने माल खरीद के अपने पास रखा है, दैट गिव्स यू मोर कन्विक्शन कि दिस इज रियल वॉल्यूम, दिस इज डिलीवरी वॉल्यूम, लोगों को इस ब्रेकआउट में विश्वास है। तो यू नीड टू हैव दिस additional checklist in your toolkit. नाउ व्हाट्स द हाई कंफर्मेशन सेटअप? अभी ये हम लोगों ने सब तीनों टूल्स समझ लिया, आरएसआई, बॉलिंजर, वॉल्यूम। इसको सेटअप किस तरह से हम लोग को देखना है? सिंपल है, दो सेटअप है, बुलिश सेटअप एंड बेरिश सेटअप। व्हाट आर द चेकलिस्ट? प्राइस मेक्स अ लोअर लो, प्राइस इज मेकिंग अ लोअर लो, मतलब वी आर लुकिंग एट डाइवर्जेंस, वी आर लुकिंग एट काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स हियर, करेक्ट? सो प्राइस इज फॉलिंग, आरएसआई मेक्स अ हायर लो। ये आरएसआई जो है ना, डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ना बॉलिंजर बैंड्स, द न्यू लो फेल्स टू टच द लोअर बॉलिंजर बैंड, मतलब बैंड्स को चल रहा था, बट अब जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो बैंड का जो एक्सपेंडेड वर्जन होता है नीचे की तरफ, उसको नहीं टच करता। द वॉल्यूम इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड, मतलब वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो कई सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर बता दी, इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख। सो नाउ लुक एट दिस। अभी क्या है, वी आर ट्राइंग टू पुट टू थ्री थिंग्स टुगेदर, सो थोड़ा चार्ट जो है ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। जस्ट लेट्स स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स हियर। नाउ प्राइसेस हैव मेड अ लोअर लो हियर, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। दिस इज अ लो, लोअर लो, हाई, सॉरी, लो, हायर लो. All right. So what has price done and what has RSI done? You have got a positive divergence. Now on the band, it was walking this band, but here it did not touch the low of the band. It gave a positive candlestick pattern. उसके बाद क्या हुआ? Eventually market अच्छा खासा रैली किया, right? It is looking like 100%, but छोड़ दो वो, आप कौन सा चार्ट था, क्या टाइम फ्रेम था, मेरे को भी याद नहीं है, but I'm just looking at the pattern moves. So if you are able to catch this, आपका स्टॉप लॉस क्या होता है? Let's say you would have entered somewhere in this area. Okay, ये पैटर्न कंफर्मेशन पे एंट्री लेते आप, ये दोनों पॉइंट का लो जो है would have been your stop loss. Correct? Any questions still here? Now, look at another example. Similar case, RSI is showing a positive divergence, prices are showing a negative lower low. Okay, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? We are very clearly seeing a big reversal move, right? यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल मूव आया। तो यहाँ पर ये जब 3 लेग का ब्रेक किया, कीपिंग दिस एज स्टॉप लॉस, कीपिंग दिस एज स्टॉप लॉस, ब्रेक ऑफ दिस 3 कैंडल्स एट द लो, द बैंड, यहाँ पर हम लोग एंट्री करते and look at the kind of move we have got. So as a technical trader, you would have said if this is 1 rupee, 2 rupee would have been your stop loss, and then you would have done TSL. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप निकल जाते and you would have made good money. 2:1, 3:1 तो आराम से बनता है इसमें. Now let's look at some more examples. Let's look at some bearish examples. Price makes a higher high, RSI makes a lower high, divergence आ गया. Bollinger Bands में again, price when it is making a low higher high, it is not touching the bands, वो walking करना छोड़ दे रहा है, bands का साथ छोड़ दे रहा है, so there is a divergence there. Volumes is also reducing, right? So ये 3-4 चीजों को लेके हम लोग क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर क्या हुआ? Prices are making higher high, यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल दिया कैंडलस्टिक पे, क्लियर कट सिग्नल है डाइवर्जेंस का, एंड प्राइस फॉल्स शार्पली. चिरंजीव गुप्ता जी, टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, आपको ये चीज क्लियरली दिखेगी. सिंपल सजेशन फॉर एनी टेक्निकल एनालिस्ट इज और एनी ट्रेडर इज, आप हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे डेली वीकली पे,
ये चीज आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियरली दिखेंगे। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उतना उसमें नॉइज होता है, तो शायद उतना क्लियरली नहीं दिखे, बट इट वर्क्स अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स, इट इज टाइम फ्रेम एग्नोस्टिक। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपमूव चल रहा था, आरएसआई वाज काइंड ऑफ गिविंग यू अ हिंट कि नहीं यार अब जो है ये, देखो आरएसआई यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर मूव चल रहा था, ट्रेंड वाज आल्सो मूविंग, दिस इज कन्वर्जेंस, बट यहाँ पर आरएसआई स्टार्टेड गिविंग अप द मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम आ रहा था लास्ट लेग, ये मोमेंटम थकता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर क्लियर सिग्नल दिख रहा था कि डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर आप एंट्री फ्रेश नहीं लोगे, राइट, दिस यहाँ पर फोमो है, यहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और एक खट करके बड़ा कैंडल इधर नीचे आया। अब आप क्या कर सकते थे भैया, यहाँ पर आपका अगर आप ट्रेड कर रहे हो, दो तीन कैंडल रेड दिख रहे हैं आपको, you would have taken some evasive action because of the divergence in the RSI and the price, and you would have at least saved yourself from this sharp fall. Okay, now ये पूरा आपको समझाया है, डाइवर्जेंस, प्राइस एक्शन, डाइवर्जेंस ऑन RSI, Bollinger Band, using volume as a confirmation. Final part, just 2 more minutes, is you plan the trade, trade the plan. How do you do that? For entry takers are, wait for the reversal to begin, don't rush. मतलब just because it is in a support or it is showing a divergence, आपको लेना नहीं है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रिवर्सल पैटर्न दिखना चाहिए प्राइस में, तब आप उसको एंटर करोगे, वेदर इट इज लॉन्ग और वेदर इट इज शॉर्ट। स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट ट्रेड्स के लिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, प्लेस द स्टॉप जस्ट अबाउट द फाइनल हाई, जो पिवट हाई होता है उसके ऊपर आप स्टॉप रखोगे। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए पिवट लो जो होता है उसके नीचे आप स्टॉप रखोगे, बहुत सिंपल है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इसमें, बिकॉज फेलियर बहुत होते हैं इसमें, इसलिए आप स्टॉप लॉसेस छोटा रखो, यू विल गेट मल्टीपल एंट्री सिग्नल्स। Now profit target is simple है, you look at the major support and resistance opposite direction में, अगर आप सप्लाई में शॉर्ट कर रहे हो तो ऑपोजिट सपोर्ट या डिमांड देखो, एंड वाइस वर्सा, राइट, और यू कीप अ सिंपल टेक्निकल स्टॉप टारगेट ऑफ 2:1 और 3:1 सेटअप, ठीक है। दोनों में से देखो पहला कौन सा है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि भाई 2:1 पे मेरा टारगेट आ रहा है, मेरा सपोर्ट आ रहा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 3:1 टारगेट देयर, वो सपोर्ट पे सपोर्ट लेना चाहिए ना प्राइस को, मोस्टली इट विल डू इफ यू आर शॉर्टिंग द मार्केट। तो यू नीड टू सी विच एवर इज द लेस, एंड मिनिमम आप रखो कि कम से कम 2:1 आवे। क्लियर, इट्स अ सिंपल ट्रेड प्लान, राइट, नो कॉम्प्लेक्सिटीज, बस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के उसको प्रैक्टिस करें, एंड इस तरह से आप ट्रेड करने की कोशिश करें, यू विल बी एबल टू get some kind of data, you will have what you would have created is a trading system, a rule based trading system. So what you have learned in this session is you have shifted from chasing trends, using lagging indicators, or feeling late to every move. You can now anticipate matching turning points, looking at the RSI and support and factors. You use leading signals like RSI and the Bollinger Band reversals to find the tops and bottoms. फिल्टर फॉल्स सिग्नल्स विथ हाई कंफर्मेशन चेकलिस्ट, आपको चेकलिस्ट समझाया है, वॉल्यूम कंफर्मेशन लिखेंगे वगैरह वगैरह, तब आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ अच्छा सेटअप पीस है कि नहीं। फाइनल टेक अवे, शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिंग टू एंटिसिपेटिंग, एंटर ट्रेंड्स अर्ली एंड ट्राई एंड एग्जिट प्रॉफिटेबली। अल्टीमेटली तो पैसा बनाने का ही सारा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, ये पूरा एक स्किल सेट है, और इस 1 घंटे में व्हाट हैव वी लर्नड, वी हैव लर्नड टू क्रिएट अ रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न यूजिंग डाइवर्जेंस एज अ टेक्निकल इंडिकेटर कॉन्सेप्ट। इट इज एज सिंपल एज दिस, ऑलराइट। तो I thank all of you for being part of this session. I hope it was informative, interesting, interactive also. I found a lot of questions, and I'm very happy that there was a very strong participation today. Hope next month when I come again, there will be much more, I'll try and bring more concepts to you guys, and you will also hopefully enjoy that. All right. So if there are any questions, I'm happy to answer those questions. If not, I'll just share my, as per SEBI mandate, I'll share my details. So you are aware of how you can reach out to me, or you can confirm my registration details on SEBI's website or on BSC as well. All right.
So I am a registered intermediary by SEBI, and these are my registration details as per the registration mandate of SEBI. So I thank all of you once again for being part of this 1 hour session. And if there are any fresh topics that you are interested to learn from me or from other instructors at Upstox, please write into the comment section, and we will be happy to come back to you with those fresh contents. Thank you. Take care. Bye-bye.